इंडियन फुटबॉल का नया सीजन शुरू हो चुका है ड्यूरैंड कप के साथ, लेकिन इंडियन सुपर लीग का सीजन आने वाला है, तो आई थॉट दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट द 5 बिग ट्रांसफर्स दैट वी हैव सीन इन द इंडियन सुपर लीग सो फार. एंड शुरुआत करते हैं मोहन बगान सुपर जायंट के साथ. अब उनके नाम में ही सुपर जायंट है, साथ में मोहन बगान है, लेगेसी, हिस्ट्री और साथ में काफी सारी फाइनेंशियल मसल है. एंड दैट इज व्हाई आई हैव टू टॉक अबाउट देयर फर्स्ट बिग ट्रांसफर. एक्चुअली नॉट देयर फर्स्ट फॉरेन साइनिंग बिकॉज वो थे अल्बेनियन फॉरवर्ड अरमांडो सदीकू, लेकिन उनकी जो सेकंड फॉरेनर उन्होंने साइन किए इन द फॉर्म ऑफ द 27-year-old फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया जेसन कमिंग्स. He is a wow player and I'll tell you exactly why. इसलिए तो ये वीडियो बनाया है आपके लिए. जेसन कमिंग्स से शुरुआत करते हैं. फर्स्ट बिग ट्रांसफर टू टॉक अबाउट. Why is he so special? Because he's been signed on a 3-year contract which tells you कि मोहन बगान को काफी कॉन्फिडेंस है इस प्लेयर में. साथ साथ सेंट्रल कोस्ट मैरिनर्स का आपने नाम सुना है? नहीं सुना तो हम बता देते हैं. सेंट्रल कोस्ट मैरिनर्स ए लीग की एक टीम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेलती है. सो ऑस्ट्रेलिया में खेलने के अलावा अभी हाल ही में वो ए लीग का टाइटल भी जीते हैं दूसरी बार. उस फाइनल में जिसमें उन्होंने यानी कि सेंट्रल कोस्ट मैरिनर्स ने मेलबर्न सिटी एफसी को हराया, उसमें एक नहीं दो नहीं 3 गोल मारे जेसन कमिंग्स ने, यानी कि he scored a hat-trick in the A-League grand finale against Melbourne City FC, which just tells you that this player is very, very special. Now, apart from that, he's also played for the Central Coast Mariners 50 times, और उन 50 मैचेस में इस बंदे ने 31 गोल और 12 असिस्ट दिए, यानी कि 43 गोल contributions in just 50 games. That is truly phenomenal stuff, and this is Australia we're talking about, which has a very high level of football. So, moving on from Jason Cummings, his adventures in the A-League, to what he's been doing with the national team. Yes, he got called up by the Australian national team as well. Australia की national team से उन्हें कॉल अप आया. वो याद है वर्ल्ड कप खेला गया था नवंबर दिसंबर 2022 में, उसमें जेसन कमिंग्स भी ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड का हिस्सा थे. ही वाज अ पार्ट ऑफ द सॉकरू स्क्वाड जिसमें उन्हें एक खेलने का मौका मिला. वो था फ्रांस के अगेंस्ट, हु वर द डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियंस दैट टाइम. 4-1 से ऑस्ट्रेलिया हारी, बट जेसन कमिंग्स ने अपना ऑस्ट्रेलिया का डेब्यू किया, व्हिच वाज ग्रेट टू सी एज वेल. सो जेसन कमिंग्स ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल चुके हैं, ए लीग में खेल चुके हैं, ए लीग की अपनी टीम के लिए हैट्रिक मार चुके हैं ए लीग के फाइनल में. So he's very, very special, and that's why he's our transfer number 1 to watch out for. The second big transfer that I wanted to talk about is none other than Roy Krishna. Roy Krishna 35 साल के हो चुके हैं, so he's not the same force that he was when he first came to Indian shores. जब वो इंडियन सुपर लीग का अपना पहला सीजन खेलने आए थे, काफी वक्त बीत चुका है उसको, तो आप पीछे की तरफ नहीं जाएंगे. एक्चुअली जाएंगे क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स को अगर हम कंपेयर करें तो भी काफी इंटरेस्टिंग है. बट रॉय कृष्णा हैज बीन साइंड बाय ओडिशा एफसी. इट्स अ स्टेटमेंट साइनिंग, इट्स अ मार्की साइनिंग, बट इट्स आल्सो साइनिंग विद अ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ ओनली 1 year, व्हिच टेल्स यू कि उनकी उम्र को देखते हुए ओडिशा एफसी ने कहा 1 साल देखते हैं बंदा कैसा करता है. अब नाउ द फिजियन हैज बीन साइंड ऑन अ 1 year कॉन्ट्रैक्ट, लाइक आई सेड, सिंस हिज डेब्यू इन द हीरो ISL in 2018-19, यानी कि 4-5 साल पहले, nobody has had more involvements in goals than Roy Krishna. मतलब कि जो प्लेयर रॉय कृष्णा के डेब्यू के बाद से खेलने आए हैं, उनसे ज्यादा गोल कंट्रीब्यूशंस किसी और ने नहीं दिए. दैट इज हाउ स्पेशल रॉय कृष्णा हैज बीन इन द इंडियन सुपर लीग एंड इन इंडियन फुटबॉल. अ टोटल ऑफ 42 goals, a total of 23 assists. That's a total of 65 goal contributions since his debut. So he's pretty special when it comes to providing and scoring goals. Now he will play in the Hero ISL 2023 सीजन अलॉन्ग विद डिएगो मोरित्सियो, जो कि ओडिशा एफसी के स्ट्राइकर हैं, जो पिछले साल के गोल्डन बूट विनर है इंडियन सुपर लीग के. तो डिएगो मोरित्सियो और रॉय कृष्णा के कॉम्बिनेशन को देखने में बहुत मजा आएगा. लास्ट ईयर रॉय कृष्णा सुनील छेत्री के साथ खेल रहे थे बेंगलुरु एफसी में, एंड एवरीबॉडी वाज रियली एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट कि रॉय कृष्णा सुनील छेत्री एक साथ कितना मजा आएगा. अब आप सोचिए कि और कितना मजा आएगा अगर डिएगो मोरित्सियो, जो गोल्डन बूट विनर है, जो अच्छा खेलते आए ओडिशा के लिए, वो रॉय कृष्णा के साथ दिखेंगे. नाउ लेट्स नॉट फॉरगेट कि ओडिशा एफसी और रॉय कृष्णा का एक्चुअली थोड़ा सा इतिहास भी है. ड्यूरैंड कप याद कीजिए, ओडिशा एफसी को नॉकआउट किया था अपने थंडरबोल्ट स्ट्राइक के जरिए रॉय कृष्णा ने. तो इट्स अ बिट स्ट्रेंज क्योंकि अब वो ओडिशा के लिए खेलेंगे और उसी टीम को उन्होंने नॉकआउट किया था ड्यूरैंड कप में. सो इट्स इंटरेस्टिंग टाइम्स इंडीड. बट रॉय कृष्णा इज एन ओडिशा एफसी प्लेयर. नाउ द ओनली प्रॉब्लम इज, और इसीलिए मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाह रहा था, कि if you look at his total goal contributions in the last 2 seasons, in his last 2 seasons he contributed to 22 goals, which is 13 goals and 9 assists. 13 plus 9, 22 goal contributions in his last 2 seasons. If you go back in time a little bit, he had 22 goal contributions in the season 2020-21, यानी कि इन 2 सीजन से पहले जो उनके गोल contributions थे वो कुल मिला के 22 थे, और जो उनका पहला सीजन था 21 goal contributions in his debut season. So 21 plus 22, 43 goal contributions in his first 2 seasons, but only 22 goal contributions in his last 2 seasons. Now there have been some factors of injury and all of that, but there's also a little bit of form and a little bit of age. Kya Roy Krishna will he be able to live up to the billing of Roy Krishna, the great striker of the Indian Super League, or will Odisha be found wanting because of the fact that Diego Maurizio को शायद उतनी सर्विस ना मिल पाए? ये तो वक्त ही बताएगा, but I'm personally very excited to see Maurizio and Krishna together. The third transfer I want to talk about is one of my favorite Indian players. जब ये बहुत छोटे से थे
तब ये कभी यूथ टीम्स के लिए खेल रहे थे भारत के लिए, और मैंने ऐसे ही अपने दोस्तों के बीच बैठे हुए कहा था यार ये फ्यूचर इंडिया कैप्टन है। अनिरुद्ध थापा के बारे में बात कर रहे हैं। अनिरुद्ध थापा इज माय थर्ड बिग ट्रांसफर दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, एंड ही इज गोइंग टू, यू गेस्ड इट, मोहन बगान सुपर जायंट। अब मोहन बगान सुपर जायंट के लिए खेलने तो ये वाले हैं, लेकिन चेन्नई एफसी के ये ऑलमोस्ट सर्टिफाइड लेजेंड से रहे हैं, क्योंकि 7 सीजन किसी और प्लेयर ने चेन्नई एफसी के लिए नहीं खेला, लेकिन अनिरुद्ध थापा ने खेला है। किसी और प्लेयर ने 100 से ज़्यादा मैचेस चेन्नई एफसी के लिए नहीं खेले, लेकिन अनिरुद्ध थापा ने खेले। उन्होंने 10 असिस्ट दिए, जो कि किसी भी चेन्नई एफसी प्लेयर के लिए सबसे ज़्यादा है, व्हिच जस्ट टेल्स यू दैट ही वाज चेन्नई इन थ्रू एंड थ्रू। थोड़ा सा बुरा भी लगता है बिकॉज जब मैं सुपर माचंस और साथ में बी स्टैंड ब्लूज, जो उनके एस्टैब्लिश फैन बेसिस उनके बारे में सोचता हूँ, तो थापा को किसी और जर्सी में देखना थोड़ा सा तो अजीब रहेगा, बट दैट्स व्हाट ट्रांसफर मार्केट डज, राइट। कोई बहुत बड़ा प्लेयर किसी क्लब के साथ बहुत बड़ा बनता है और उसके बाद वो दूसरे क्लब में जाता है, एंड हाउ ही परफॉर्म्स। यू रिमेंबर संजय जिंगन प्लेड फॉर केरला ब्लास्टर्स फॉर 5 years and then he moved on to pastures anew. But similar story with Anirudh Thapa, and how will he perform is the interesting question. Now if you remember that he joined Chennai FC in 2016 as a development player, और मुझे सीजन अच्छी तरीके से याद है बिकॉज एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट दिस यंग लिटिल बॉय फ्रॉम देहरादून, ये कैसा खेलेंगे कैसा करेंगे, लेकिन अनिरुद्ध थापा ने बहुत जल्दी जो है ना चीज़ें समझ ली और ज़िंदगी में फुटबॉल खेलने को अपना मकसद बना लिया। एंड दैट इज़ व्हाई आई एब्सोल्युटली लव दिस बॉय, बिकॉज ही फुटबॉल रन्स थ्रू हिज veins, and that's why Anirudh Thapa is so special, not just for the national team but also will be for the Mohan Bagan Super Giant side. Now his best season for Chennai FC actually came under Owen Coyle, जो कि अब फिर से चेन्नई एफसी के मैनेजर बन गए। तो ओवन कॉयल के लिए भी थोड़ा सा अजीब रहेगा यार, थापा का है, थापा नहीं दिख रहा, थापा अब है नहीं, थापा जा चुके हैं मोहन बगान सुपर जायंट, अब थापा के खिलाफ उनको प्लॉट करना पड़ेगा। His best season, like I said, came under Owen Coyle, where he provided 6 assists, also scored a goal. The interesting thing about Anirudh Thapa is that he rises to the occasion. मुझे अच्छी तरह याद है चेन्नई एफसी जो पिछले कुछ सीजन्स में 2 बार प्लेऑफ्स में पहुंचे, उन दोनों प्लेऑफ्स के सेमीफाइनल्स में अनिरुद्ध थापा का गोल देखने को मिला है। He's a big match player, he's a super player, he's got silk and he's got steel, and he's a very vital cog in anyone's midfield, let alone Mohan Bagan Super Giants. So really excited to see Anirudh Thapa, and here's wishing him all the very best, but he's our transfer number 3. Okay, the fourth big transfer that I want to talk about after Anirudh Thapa at number 3 is number 4, Akash Mishra going to Mumbai City FC. Now, yes, Akash Mishra is going to the current league shield holders, that is Mumbai City FC. अब Mumbai City FC में already काफी wealth of riches हैं, लेकिन उसमें आकाश मिश्रा क्या रोल निभा सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आकाश मिश्रा 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए गए, यानी कि his contract will end in 2028. That means Mumbai City FC have really put their faith in this youngster called Akash Mishra. Akash Mishra के बारे में स्पेशल क्या है? Number 1 is the fact that he is very consistent. The fact that his performances don't dip, the fact that he plays almost all the matches. अब उनके डेब्यू सीजन से आप ले लीजिए, उन्होंने अपना डेब्यू सीजन खेला था, उसमें हर मैच खेला, उसके दम पे वो इंडियन नेशनल टीम में सेलेक्ट हुए, फिर इंडियन नेशनल टीम के लिए कंसिस्टेंटली खेलते आ रहे हैं। फिर जो दूसरा सीजन था उसमें भी उन्होंने हर मैच खेला और अपनी टीम को फाइनल तक ले गए, और वो फाइनल भी हैदराबाद एफसी जीती। Hyderabad are going to miss him because he's a super left wing back that any side would love to have, but Mumbai City FC have got his services. Now the interesting thing is, अगर आप उनके पिछले सीजन के नंबर्स देखें, the defensive metrics for Hyderabad FC, most successful tackles 32, Akash Mishra. Most interceptions for any Hyderabad FC player 35, Akash Mishra. Most blocks for any Hyderabad FC player 33, आकाश मिश्रा। दैट जस्ट टेल्स यू कि चाहे वो डिफेंसिव टैकल्स हो, चाहे इंटरसेप्शंस हो, चाहे वो ब्लॉक्स हो, आकाश मिश्रा अपना काम करते हैं। साथ साथ ही हैज द एबिलिटी टू बॉम्ब फॉरवर्ड एंड रियली क्रिएट समथिंग ऑन द अटैकिंग फ्रंट फॉर अ मुंबई साइड दैट लव्स प्लेइंग अटैकिंग फुटबॉल। सो वेल डन टू आकाश मिश्रा ऑन साइनिंग विद मुंबई सिटी एफसी। हार्ड लक हैदराबाद, यू आर गोइंग टू मिस हिम, बट आई एम रियली एक्साइटेड टू सी आकाश, हु इज माय ट्रांसफर नंबर 4. Okay, transfer number 5 that I really want to talk about is Sahal Abdul Samad. Kerala Blasters fans, look away right now because इतने सालों तक वो आपके लिए खेले हैं, लेकिन फाइनली मोहन बगान सुपर जायंट ने एक मेगा डील में उनको साइन कर लिया है। तो मोहन बगान सुपर जायंट के बारे में अगर बात करें तो यार इतने सारे प्लेयर ये साइन कर रहे हैं। इन्होंने अनवर अली भी ले लिया, इन्होंने अनिरुद्ध थापा भी ले लिया, इन्होंने जेसन कमिंग्स को भी साइन कर लिया, अब साहल अब्दुल समद भी वहाँ चले गए। क्या टीम टाइटल जीतने वाली है? इसके बारे में शायद हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे और करना बनता है, लेकिन साहल अब्दुल समद के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था कि व्हाट इज ही ऑल अबाउट। लॉट ऑफ पीपल talk very highly of Sahal Abdul Samad, his skills, his trickery, his ability to create passes from absolutely nowhere, and of course his ability to score goals every now and then. मैं सोचा सहल के बारे में थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं और देखते हैं उन्होंने किया क्या है। सबसे पहली बात, 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट पे मोहन बगान सुपर जायंट ने उन्हें साइन किया है, which shows that they have a lot of faith in this player, and Sahal doesn't have to worry too much about his future because मोहन बगान have said 5 साल आप हमारे साथ हैं, आप हमारी मिडफील्ड संभालने वाले हैं। अब सहल की एक्चुअली बेस्ट परफॉर्मेंस सीजन 2021-22 में आई थी, जब वो इवान वुकोमानोविच के अंडर खेलना उन्होंने शुरू किया था। उसमें उन्होंने 6 गोल डाले थे, उन्होंने 1 असिस्ट भी दिया था, एंड दैट वाज हिज बेस्ट सीजन सो फार। अपार्ट फ्रॉम दैट ही played 21 games. A lot of people have actually complained कि सहल अब्दुल समद गेम्स तो काफ़ी खेलते हैं, लेकिन एज अ सब्स्टिट्यूट या तो चले जाते हैं या फिर आते हैं। तो a lot of people thought that not enough consistency in his play, कि वो 90 मिनट प्लेयर नहीं है। इस सबको रॉन्ग प्रूव करने के लिए अब वो मोहन बगान गए, जहाँ पे जुआन फर्नांडो
किस तरीके से उन्हें यूटिलाइज करते हैं देखना बहुत दिलचस्प होगा। कुल मिला के 92 appearances for the Blasters. He managed to repay their faith by scoring 10 goals and 8 assists and all of that. And his 8 assists actually for the Kerala Blasters are the most for any Indian player in their history, which tells you कि सहल कितने valuable थे. And इसीलिए I said Kerala Blasters fans look away right now because Sahal is now heading to another rival club. Interestingly, playing for the national team, Igor Stimac has spoken very highly of him. He loves the fact that he brings something, that X factor to the table. 2 साफ चैंपियनशिप फाइनल्स में भारत को जीत मिली है, उन दोनों में सहल का इन्वॉल्वमेंट रहा है। या तो उन्होंने गोल किया जैसे कि नेपाल के अगेंस्ट, या फिर गोल सेटअप किया जैसे लालन ज्वाला चांगटे का गोल उन्होंने कुवैत के अगेंस्ट सेटअप किया था 2023 के साफ कप फाइनल में। तो ही हैज द एबिलिटी टू स्कोर, ही हैज द एबिलिटी टू प्रोवाइड, he has the ability to create something out of nowhere. He has that X factor, Sahal Abdul Samad. But सबसे ज़रूरी बात कि क्या Juan Fernando उनसे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस निकाल पाएंगे. That could dictate how the season goes for Mohun Bagan Super Giant, and he'll be playing alongside Anirudh Thapa. So I'm really excited to see how that combo works out. So these are the 5 transfers. Apart from that, some other notable transfers that I watched out for was Sandesh Jingan going to FC Goa. Yes, Sandesh Jingan from Kerala Blasters to Mohun Bagan, then to Bengaluru FC, back to Bengaluru FC, and then to FC Goa. Now Goa are under Manolo Marquez, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि संदेश जिंगन को कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि अनवर अली जो कि वहाँ खेल रहे थे अब जा चुके हैं, you guessed it, मोहन बगान सुपर जायंट. उसके अलावा the other interesting transfer for me is Ahmed Jahu going to Odisha FC. Yes, Sergio Lobera has come back and he's come back to Odisha FC. So वो मुंबई के साथ नहीं दिखेंगे, वो गोवा के साथ नहीं दिखेंगे, वो ओडिशा जाएंगे. तो ओडिशा में उन्होंने अहमद जहू को भी बुला लिया और मुर्तादा फॉल को भी बुला लिया. उन्होंने कहा आइए आप मेरे अंडर ही फुटबॉल खेलेंगे इंडिया में. उसके अलावा प्रीतम कोटाल जो स्वैप डील हुई है जिसमें सहल मोहन बगान सुपर जायंट गए, उसी से प्रीतम कोटाल जो है वो मोहन बगान से केरला ब्लास्टर्स आ गए. दैट शुड बी इंटरेस्टिंग. प्रीतम कोटाल एंड प्रवीर दास, द 2 Bengalis playing for Kerala Blasters. Fingers crossed for them. Hope they do really well because their defense needed some solidity and needed some experience. The last transfer that I wanted to talk about was Tiri going to Mumbai City FC. Now Tiri has been around in Indian football for the longest time possible. Right from season 2 of the ISL, he's been playing his football. बीच में कुछ injuries का भी दौर रहा है, but Tiri is a vital player. He's got lots of experience playing in the Indian Super League, and I think he'll provide a lot of value to Des Buckingham's side in Mumbai City FC. So these are my 10 transfers that I wanted to mention, 5 that I wanted to discuss in detail. आपको कौन से transfers सबसे interesting लगे, कौन से सबसे ज़्यादा ऐसे लग रहे हैं कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाल पाएंगे इस लीग में, आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए. अगले वीडियो तक कीजिए इंतजार, तब तक के लिए गुड बाय मेरे यार.